Guys, welcome again. Myself MD Tariq Anwar. I am working as assistant professor in mechanical engineering department at St Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. Today, I am going to deliver a lecture on the topic that is the terms used in compression spring and end connections of the helical spring or compression spring. Helical springs and compression springs are the same, so no need to worry. I can use compression spring or I can use helical spring, both are same thing. So we'll discuss in this video lecture series, that is the terms used in compression springs. First one is solid length. When the compression spring is compressed until the coils come in contact with each other, then the spring is said to be a solid. Already explained in the last video lecture series, that is the different types of spring on helical springs, that is it is in the form of coils. Clear? So when the compression spring is compressed, or you can say helical spring is compressed until the coils come in contact with each other, coil का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए, then the spring is said to be a solid. The solid length of a spring is the product of total number of coils and the diameter of the wire. Clear? Diameter of coil wire होगा कुछ, there will be a diameter, that is the diameter is denoted by D, already explained. So you should remember. Mathematically, solid length of the spring is given as Ls, or you can write Ls in suffix. So solid length given as n dash into D, where n dash is total number of coils and D is the diameter of the wire. Now we will discuss free length. What is free length? Free length, the free length of a compression spring as shown in figure, I will show the figure, wait for that, is the length of the spring in the free or unloaded condition. For example, spring is in vertical condition, तो फ्री लोड उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहा है, देयर इज नो लोड which is acting on that spring. So in that case, when in this situation, the length of the spring in free case, this is known as free length. It is equal to the solid length plus the maximum deflection or compression of the spring and the clearance between the adjacent coil when fully compressed. Clear? It is equal to the solid length plus the maximum, कितना deflect हो सकता है वो, deflection or compression of the spring, and the clearance between the adjacent coil when fully compressed. Mathematically, this is given as free length of the spring, that is Lf is equal to solid length plus maximum compression plus clearance between adjacent coils or clash allowance. What is clash allowance? I'll explain with the help of diagram. It will be more clear to you. Lf, that is solid length, Ls plus maximum compression plus clearance between adjacent coils. जब हम solid length पे उस पर जा रहे हैं तो there will be some clearance between coils. This is known as clash allowance. That is equal to n dash t plus delta max plus 0.15 or 0.15 delta max. The following relation may also be used to find the free length of a spring, that is Lf is equal to n dash t plus delta max plus n dash minus 1 into 1 mm. In this expression, the clearance between the two adjacent coil is taken as 1 mm. Clear? क्या किया मैंने इसमें, जितने कॉइल्स उसके बीच में गैप कितना लिया मैंने, 1 mm का, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए n डैश माइनस 1, n डैश टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स माइनस 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो ये हमको क्लियरेंस मिल गया. सी दिस डायग्राम, this concept will be more clear to you.
that is d is the main diameter of spring, p is the pitch, d is the diameter of the coil, fl is, or you can say lf is the free length of the spring. When we apply a load on this spring, that is the load W is applied on this spring will be compressed, or you can say spring is in compressed condition due to application of this load W. So this compression is delta. Maximum कितना deflect होगा, delta. So this is compressed length I have shown in the second diagram. Focus on the third diagram, that is compressed solids. Completely मैंने क्या किया, उसको एकदम compressed कर दिया. There is no gap between the coils. So this is known as compressed solid condition. So I have used one term, clash allowance. What is clash allowance? So see second and third diagram in this page. Draw a line from compressed solid, a horizontal line from top of the W. क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, एंड कहाँ से, कंप्रेस्ड लेंथ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों के बीच का जो गैप होगा दिस इज नोन एज क्लैश्ड अलाउंस. डिफरेंस बिटवीन कंप्रेस्ड सॉलिड एंड कंप्रेस्ड लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज क्लैश अलाउंस. दिस इज गिवन एज 0.15 डेल्टा मैक्स. मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेल्टा मैक्स मतलब वर्किंग जो डिफ्लेक्शन है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज नोन एज क्लैश अलाउंस. नाउ वी विल डिस्कस दैट इज अनदर टर्म यूज्ड इन हेलिकल स्प्रिंग और कंप्रेशन स्प्रिंग, दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स. Spring index is defined as the ratio of the mean diameter of the coil to the diameter of the wire. Clear? Diameter of wire ये स्प्रिंग बनाने के लिए यूज़ हुआ है. और D, कैपिटल D इज द mean diameter of the system, or you can say spring. So spring index is given as mathematically C is equal to D upon D. It is denoted by capital C. D is the main diameter, D is the coil diameter, where D is the main diameter of the coil and D is the diameter of the wire. Another term, that is spring rate, very very important term, that is the spring rate. Spring rate, it is also known as stiffness or named as spring constant, is defined as the load required per unit deflection of the spring. क्या है ये स्प्रिंग रेट, एज द लोड रिक्वायर्ड, कितना लोड चाहिए पर यूनिट डिफ्लेक्शन, फॉर 1 mm डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना लोड लगेगा, दिस इज नोन एज स्प्रिंग रेट. 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर का स्प्रिंग तो होता नहीं है, लार्ज साइज स्प्रिंग इज नॉट पॉसिबल. सो आई एम कंसिडरिंग हियर इन टर्म्स ऑफ mm. लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, मैथमेटिकली it is given as spring rate denoted by small k. Small k is spring stiffness, already explained in the last video lecture series. K in case of series, in case of parallel connection, springs are in parallel connection, springs are in series connections. So k is nothing but stiffness of the spring or spring constant, or you can say spring rate, is given as W upon delta, where W is the load and delta is the deflection of the spring. Now next term is known as pitch, that is a small p. I have shown in the diagram in the above page. The pitch of the coil is defined as the axial distance between adjacent coil in uncompressed state. Clear? पिच क्या है, दो कॉइल के बीच का गैप, कब, अनकम्प्रेस्ड कंडीशन. मैथमेटिकली इट इज गिवन एज पिच ऑफ द कॉइल, दैट इज डिनोटेड बाय P, फ्री लेंथ अपॉन n-1. अप्लाई द फार्मूला, you can find pitch by this formula. The pitch of the coil may also be obtained by using the following relations, that is pitch of the coil
P is equal to LF minus LS upon N dash plus D. Each and every term you all know. LF free length, solid length, D is the diameter of the coil, and dash is total number of coils. So say this: LF free length of the spring, LS solid length of the spring, and dash total number of coils, and D is the diameter of the wire. And now we will discuss end connection for compression helical spring. ठीक है, एंड कनेक्शंस, एंड का जो कनेक्शन है स्प्रिंग का किस टाइप का रहेगा, स्प्रिंग हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। वायर फॉर्म में क्या होगा, वायर इन द वायर फॉर्म, कॉइल्स क्या हो, कॉइल्स फॉर्म में क्या होगा, रोटेट करेंगे इन ऑन द शाफ्ट, फिक्स्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब क्या क्या रोटेट किया उसको मैंने, और विद द हेल्प ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स which are used to manufacture a spring. You can refer YouTube videos to see the manufacturing of spring. So क्या होगा, स्प्रिंग का कॉइल्स बन गया, चलिए। तो बन तो गया, बट उसके एंड कनेक्शन, टॉप एंड बॉटम कनेक्शन किस टाइप के रहेंगे, दिस इज नोन एज एंड कनेक्शंस। सो फोकस ऑन दिस डायग्राम हेयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 diagrams. So these are the representation, or you can say front view. Below the diagram या नीचे वाला जो डायग्राम है वो क्या है, वो क्या है, फ्रंट व्यू ऑफ द स्प्रिंग, एंड टॉप वन इज़ द टॉप व्यू ऑफ दैट स्प्रिंग। एंड रिप्रेजेंटेशन तरीका क्या है इसका, फर्स्ट वन इज़ प्लेन एंड्स, क्लियर। हियर आई हैव शोन, शिफ्टेड द पेज so that it will be more clear to you. I'll take a pause here. First one is प्लेन एंड्स। प्लेन एंड्स क्या रहेगा, किस टाइप का रहेगा, एज इट इज़, जैसा है स्प्रिंग वैसा रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड एंड्स। एंड्स को क्या करेंगे हम, ग्राउंड कर देंगे, ग्राइंडिंग करके जो एंड्स बनेगा उसका रिप्रेजेंटेशन का टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, हैचिंग लाइन्स के शो किया है, क्लियर। दिस इज़ नोन एज ग्राउंड एंड्स। थर्ड वन इज़ दैट इज सी पार्ट, स्क्वायर्ड एंड। क्या किया, स्क्वायर्ड है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड मीन्स 90 डिग्री पे, क्लियर। Squared end, this is known as square end. D part is squared and ground ends, clear. This is the representation, squared and ground ends. See the diagram, squared भी किया है, ठीक है, 90 डिग्री पे भी है, and ground भी किया है, this is known as squared and ground ends. So see this table, this is the table, and I have made this table to show what will be the solid length, free length, and total number of turns in case of प्लेन एंड्स, ग्राउंड एंड्स, स्क्वायर्ड एंड ग्राउंड एंड्स। जब एंड कंडीशन डिफरेंट रहेंगे तो सॉलिड लेंथ में भी इफेक्ट पड़ेगा, फ्री लेंथ पे भी करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी करेगा, क्लियर। सो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज इन केस ऑफ डिफरेंट एंड कंडीशंस। सो फर्स्ट वन इज प्लेन एंड्स, total number of turns in this case, that is n dash, will be given as n, solid length n plus 1 into d, n plus 1 in the bracket. It is clear, so need to write, no need to explain, that is in the bracket, n plus 1 into d. Free length is given as p into n plus d. Similarly, in case of ground ends, total number of turns given as n, solid length n into d, free length p into n. Here d term is missing, clear. A squared end n plus 2 will give you total number of turns, n plus 3d solid length, and p into n plus 3d will give you free length. Similarly, and last one, a squared and ground ends, that is total number of turns, in this case will be n plus 2, and solid length n plus 2 into d, and free length will be p into n plus 2d. So you can remember this part for finding out solid length and free length in case of different end condition of the spring.
So now we'll discuss stresses in helical spring and circular wire. स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर. सर्कुलर वायर है कॉइल्स के फॉर्म में, उसमें किस टाइप के स्ट्रेस डेवलप होंगे, कितने टाइप्स के, व्हाट आर द स्ट्रेसेस. सो कंसीडर ए हेलिकल स्प्रिंग मेड ऑफ सर्कुलर वायर, ऑलरेडी एक्सप्लेन कैसे बनता है, एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड W एज शोन इन फिगर. आई विल शो द फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो let D is the main diameter of the spring coil. Small d is the diameter of the spring wire. N is the number of active coils. G is the modulus of rigidity of the spring material. Clear? W is the axial load on the spring. Tau is the maximum shear stress induced in the wire. C is the spring index, that is given as D upon D. Clear? Already explained. P is the pitch of the coils and delta is the deflection of the spring as a result of an axial load W. जब लोड W हम लगाएंगे तो deflection of the spring होगा, और you can say there will be a deflection in the spring. So these are the different terms already shown here. I am showing all in one page. This is the mean diameter of the spring coil and so on. So applying the formula and using this, we will get the final equation. So first of all, this is diagram or figure A, that is axially loaded helical spring. Clear? This is the main diameter, W is the load on this spring. Clear? So due to this load W, there will be a deflection in the spring. Now focus on the diagram B, free body diagram showing that wire is subjected to torsional shear and a direct shear. Very important point. इसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी साइमल्टेनियसली. ड्यू टू दिस लोड W, देयर विल बी डायरेक्ट शेयर. डायरेक्ट शेयर मीन्स कहाँ पे होगा, वायर पे होगा. वायर को हमने कट कर दिया ड्यू टू दिस लोड W. क्लियर? सो दिस इज डायरेक्ट शेयर. देयर विल बी टॉर्जनल शेयर. कॉइल क्या है, राउंड केस में है, टर्न्स के केस में है. ड्यू टू लोड W लोड कहाँ पे लग रहा है, सेंट्रल एक्सियली लग रहा है. देयर विल बी this type of load is eccentric axial load. Clear? There will be a longitudinal axis or central axis of the coil or of the wire. From central axis or from the longitudinal axis of the wire to the distance of W, this load W is acting as an eccentric axial load. This eccentric axial load will act as a twisting or torsional stress in the wire. So I hope you can understand by this explanation what type of stresses are occurring in the spring coils or in the spring. Now consider part of the compression spring as shown in figure B, already explained. The load W tends to rotate the wire due to the twisting moment. I explained क्यों कर दिया मैंने, twisting moment की वजह से. उसमें क्या होगा, रोटेट करेगा वायर. सेट अप इन द वायर, दस टॉर्जनल shear stress is induced in the wire. A little consideration will show that part of the spring as shown in figure B is in equilibrium under the action of two forces, W and the twisting moment. We know that the twisting moment is given as torque is equal to, or tau T is equal to W into D by 2. ने बताया था कहाँ से, W से लेकर के उसके मिडल पार्ट पे और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द वायर पे. तो ये कितना होगा, D/2 होगा. क्लियर? तो W इंटू D/2 ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट करेगा उसमें. वी कैन राइट 5/16, और यू नो दैट 5/16 τ1 इंटू D³. आई हैव गिवन ए नेम τ1 so that because we are using τ2 also. So for understanding and simplification purpose, I have used the term here shear stress. This is τ1 for twisting moment. So we can write τ1 is equal to 8WD, capital D upon pi D cube. Now
A torsional shear stress diagram is shown in figure A. In addition to the torsional shear stress tau 1 induced in the wire, the following stresses are also act on the wire. That is direct shear stress due to the load W. Already explained. क्या कर रहा है, लोड क्या कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, शेयर मीन्स कट कर रहा है वायर को. दिस इज नोन एज डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस ड्यू टू लोड W एंड स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द वायर. वायर क्या है, कर्व कंडीशन में है, तो देयर ऑल्सो स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द वायर. वी नो दैट direct shear stress due to load W is given as tau 2 load upon cross sectional area of the wire. Clear? So you can write W upon pi by 4 d square. D is the diameter of the wire. So 4W upon pi d square you can write. 4 को क्या है ऊपर शिफ्ट किया मैंने. Clear? Now a direct shear stress diagram is shown in figure B and the resultant diagram of torsional shear stress and direct shear stress is shown in figure C. So this is the stress distribution diagram in case of shear stresses or torsional shear stresses you can say, and direct shear stresses. So focus on this diagram. This is the diagram. First one is ए पार्ट, दिस इज टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम. जब किसी पार्ट पे टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस होगा तो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ये डायग्राम है. कैसे हम शो करते हैं, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, आउटर बाउंड्री पे. सेंटर पे क्या होता है, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस विल बी 0. सो दिस इज द टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम. बी पार्ट इज डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस डायग्राम. डी इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल. Already know, so no need to explain. B is the direct shear stress diagram. Third one is, that is C part, resultant torsional shear and direct shear stress diagram. दोनों को हमने combine कर दिया. This is the resultant torsional shear and direct shear stress diagram. I have shown here inner edge and outer edge. Means that considering the spring, there will be an inner edge, there will be an outer edge because coil has some diameter. अगर हम कंसिडर करेंगे अंदर से डिस्टेंस, दिस इज नोन एज इनर एज ऑफ दैट कॉइल, एंड आउटसाइड वाला हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम सेंटर टू, दिस इज नोन एज आउटर एज. हियर आई हैव शोन एक्सिस ऑफ स्प्रिंग विथ रेड इन कलर. Now focus on diagram D, that is resultant torsional shear, direct shear and curvature shear stress diagram. इसमें क्या तीनों को ऐड कर दिया मैंने, कर्वेचर इफेक्ट को भी ऐड कर दिया. सिमिलरली कर्वेचर इफेक्ट कैसे ऐड करेगा, ऐड D/2 पे. क्लियर? सो हेयर आई हैव शोन कैपिटल D/2. दिस इज द कर्वेचर इफेक्ट. सो नाउ वी विल समराइज द फॉर्मूला. Already know the formula 8WD upon pi d cube, that is tau 1. We know that the resultant shear stress induced in the wire is tau is equal to tau 1 plus minus tau 2. क्लियर? ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो समेशन ऑफ बोथ 8WD upon pi d cube torsional shear stress and 4W upon pi d square direct shear stress. This is the resultant. The positive sign is used for the inner edge of the wire and the negative sign is used for the outer edge of the wire. Clear? पॉजिटिव साइन कहाँ के यूज़ करें, इनर एज के लिए. नेगेटिव साइन कहाँ के लिए यूज़ करेंगे, आउटर एज के लिए. Since the stress is maximum at the inner edge of the wire, therefore the formula, that is maximum shear stress induced in the wire, is given as torsional shear stress plus direct shear stress is equal to 8WD upon pi d cube plus 4W upon pi d square. After taking 8WD upon pi d cube common, you will get in the bracket, it is 1 plus D upon 2D. इट इज़ क्लियर और नॉट. जब हम इसको 8WD को
8WD पाई डी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर नीचे बचेगा, 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो 4W बचेगा, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर बचेगा. सो आई हैव टेकन हेयर 8WD अपॉन पाई डी क्यूब एज ए कॉमन, inside the bracket 1 plus d upon 2 capital D or 2 mean diameter. So we can write this equation as 8WD pi d cube 1 plus 1 upon 2c. अगर हम ये स्मॉल d को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d by d. d by d is nothing but spring index, clear, which is denoted by c. So 1 plus 1 upon 2c is given as or known as shear stress factor. So in place of writing 1 plus 1 upon 2c, we can write Ks into 8WD upon pi d cube. Clear? Already explained what is shear stress factor. So from the above equation, it can be observed that the effect of direct shear that is 8WD upon pi d cube into 1 by 2c is appreciable for a spring of a small index c. Clear? Here something is missing, this is 1 plus 1 upon 2c. So there will be a correction, you can correct it. So also we have neglected the effect of wire curvature in equation number 3. I have given this equation as equation number 3. The first equation वो क्या था, torsional shear stress equation. Second one is direct shear stress equation. This is third one. So it may be noted that when the spring are subjected to static loads, the effect of wire curvature may be neglected. Clear? Because yielding of material will relieve the stresses. जितना yield करेगा उतना relieve कर देगा stress को, इसलिए हम कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं. In order to consider the effects of both direct shear as well as curvature of the wire, a Wahl's stress factor, which is denoted by capital K, introduced by A.M. Wahl's, he was a scientist, may be used. The resultant diagram of torsional shear, direct shear and curvature shear stress is shown in figure 23.11D. क्या किया था मैंने लास्ट में जो डी फिगर में दिखलाया था, सबको कंबाइंड करते हुए डायरेक्ट, टॉर्जन एंड कर्वेचर इफेक्ट. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर इज गिवन एज टाउ इज इक्वल टू के इंटू 8WD अपॉन पाई डी क्यूब इज इक्वल टू के 8WC अपॉन पाई डी स्क्वायर. वी कैन राइट दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 बिकॉज डी अपॉन डी, अगर हम पाई डी क्यूब में से एक डी को निकाल लेंगे तो डी अपॉन डी होगा, डी अपॉन डी को वी कैन राइट सी. सो इन द नेक्स्ट टर्म आई हैव रिटेन के इंटू 8WC अपॉन पाई डी स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज गिवन एज 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.0 or you can say 0.615 upon C. This is the Wahl's stress factor. So I'll finish my topic today with this diagram. This is the formula for a spring. Different types of formula. First one is direct shear, torsional shear. Second one is direct shear. Third one is considering shear stress factor. And fourth one is considering Wahl stress factor. So values of K for a given spring index. A spring index you can easily find with the help of D, capital D and a small d, wire diameter and wind diameter, may be obtained from the graphs as shown in the figure. So this is the graph to find out the Wahl's stress factor. By using this, on x-axis there is a spring index and y-axis stresses or stress factor K. The Wahl's stress factor K may be considered as composed of two sub-factors Ks and Kc, such that K is equal to Ks into Kc, where Ks stress factor due to shear and Kc stress concentration factor due to curvature. So by this graph you can find out Wahl stress factor. Today I am finishing my topic here. So thank you guys very much. I'll
meet in the next video lecture series.